Morning students. Today now we will discuss working with Flash CS3. In this chapter we will discuss symbols and animation, using animations, shape twins and how to create a symbol. Create a motion twins and motion guide twins. Now we will discuss symbols and animation. What are the symbols? A symbol is a visible object for static image or animations. They are either created with the help of drawing tools or import from other resource. We can say that creating objects image, just like using a paint, we create an image, and some pictures imported from your galleries, other libraries. So easily you import images in the animations. So instance is a copy of the original symbol. The size, color, shape and position can be altered without affecting the original symbols. Symbols reduce the file size and simply the editing process of movies. If we modify the symbols, it will change all the instance. They are mainly three types. Symbols mainly three types. Number one, movie clip. Number two, button. Number three, graphics. Got it? So next point is how to create a symbol. हम सिंबल कैसे बनाएंगे, हम इस पे बात करते हैं. To create a symbol following these steps. To create a symbol following these steps, first one is the draw and on the stage by selecting the rectangular tool. In your Flash, firstly we select the rectangular tools and oval tools. Which tools? Rectangular and oval tools. Then choose the selection tools and double click to the object टू सेलेक्ट इट. जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उस पर क्या करना है, फिर डबल क्लिक करना है. देन व्हेन इट इज सेलेक्टेड चूज मॉडिफाई कन्वर्टेड सिंबल. फिर क्या करना है, जो मॉडिफाई कन्वर्टेड टू सिंबल है उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है. देन यू विल गेट अ कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स विथ 3 बिहेवियर ऑप्शन. बाय डिफॉल्ट मूवीज क्लिप बिहेवियर इज सेलेक्टेड. अब वहाँ पे आपको 3 सिंबल्स आपको मिलेंगे, मूवीज क्लिप, बटन, ग्राफिक्स. लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट होगा वो क्या होगा, मूवी क्लिप होगा. ठीक है, मूवी क्लिप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बिहेवियर सेलेक्ट होगा वहाँ पे. नेक्स्ट चूज द ग्राफिक्स बिहेवियर एंड स्पेसिफाई द सिंबल नेम G1 एंड क्लिक ओके. हमें क्या करना है, जो भी एक इमेज बनानी होती है उस बेसिस पे उसका नाम दे देते हैं उस बटन का, और उस पर हम मान लीजिए हमने G1 दे दिया नाम, तो वहाँ से फिर नाम देने के बाद फिर क्या करेंगे, ओके बटन पे हम क्लिक कर देंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि द नेम ऑफ द सिंबल अपीयर्स बिसाइड द सीन्स नेम. नोटिस दैट व्हेन अपीयर्स विद द ब्लू लाइन अराउंड इट द सिंबल इज एडेड टू द लाइब्रेरी. तो सिंबल होगा कहाँ पे ऐड हो जाएगा, लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा. नाउ यू हैव एन इंस्टेंस ऑफ द वैन ऑन द stage. Select the one instance to change the appearance. Hence, you can edit the properties of the graphic symbol G1. Then right click on it and select the edit option from the context menu. Now change the color front body of the one to orange. If you want to exit from the symbol editing mode, then the click scene 1. Then the help you to go back to view the main movie timeframe using animation. When a series of images appear in a fixed interval of time, then it appears to show movement. This can be termed as animation. Animation can be created in Flash with the help of tuning, which means in the between the movement from one keyframe to the other became convenient with the use of
tuning method in Flash. There are two types of twin animation. First one is motion twin, second one is shape twin. The motion twin. The main difference between both the tuning in that motion tuning work on symbols, whereas shape tuning is used with objects that are not symbol and are under ungrouped. तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि जो मोशन ट्यूनिंग होती है वो किस लिए यूज होती है। तो मोशन ट्यूनिंग वर्क ऑन सिंबल्स, ठीक है। तो मोशन ट्यूनिंग का यूज कहाँ पे होता है, सिंबल्स के साथ में होता है, जबकि शेप ट्यूनिंग का यूज किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट और जो अनग्रुप्ड हमारे होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं यूज, शेप ट्यून का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, क्रिएट अ मोशन ट्यून। क्रिएट अ मोशन ट्यून, वी create a motion twin by defining properties. For instance, a group object or text in a starting keyframe and then changing the object's properties. If we needed at another point of succeeding keyframe, first one, to create a motion twin, we will drag the graphic symbol G1 from the library window to the stage to give an animation effect on it. In the timeline, double click the layer 1 title and type the layer name V1 animation and press the enter key. Now the symbol is in the frame 1 of the one animation layer. See in the picture, layer name one animation, change the layer name, okay. Move the pointer to the frame 330 in the timeline and click the gray field below 30. Right click in the field and choose the insert keyframe option or press F6 to insert a new keyframe. Select the one and move it to the right side of the stage. Select timeline at any place between frame 1 and frame 30. Right click and select create motion twin. A light grayish blue bar with the solid arrow will appear between the two frames as shown in figure 9.8. In this figure, so gray and blue here, create a motion twin here, okay. Right click, then select the control menu and click on the test movie option or press Ctrl plus enter to view the effect of motion twin. Then the shape twin. Shape twin is used to change the shape of an object into another. Shape twin does not work if the object is converted into symbols. We can create a wonderful morphing effect by using shape twin. Suppose we have a book and want to make it appear to changing into a circle. In this case, we need two shapes, namely a square and circle, to be drawn in a different frame at different point of the time. Here, one frame is located a circle and another frame, the key frame is the square, okay. So we can do this by using the shape tuning. First one, select the stroke color blue and fill color yellow. Draw a square here. In the first keyframe of the timeline, do not convert it to symbol. Select the frame 45 and insert keyframe by selecting the insert, then timeline, then keyframe option. Insert here, see here, insert, then timeline, then keyframe, okay. While keeping playhead on frame 45, delete the square object from your working area and draw a circle shape as shown in figure 9.1. इसको क्या करना है, स्क्वायर को डिलीट करना है, फिर यहीं पे सेम मेथड से क्या करना है, सर्कल बनाना है. सेलेक्ट एनी फ्रेम बिटवीन 2 to 44 एंड सेलेक्ट शेप
from the twin option in the property inspectors. Select frame between 2 to 45. See here, this one is, and selecting shape twins. Properties, none, motion, shape, destructive. We select the shape twins. Now click the control test movie command to play the movie and view the shape twin effect. Control test movie, control plus enter and see shape, play a movie. Motion guide twins. When we visit an unknown place, we do not know which path to follow. So it is better to take the help of guide who know the routes. He will take us to our destination. Similarly, in Flash, motion guide define the path of movement of an object. मोशन पे एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कहीं क्या आते हैं अननोन प्लेस पे घूमने जाते हैं, क्या बताया गया, जब भी हम कहीं अननोन प्लेस पे घूमने जाते हैं तो क्या होता है, वी डू नॉट नो विच पाथ टू फॉलो, हम कौन सा रास्ता को फॉलो करें. सो इट इज़ बेटर टू टेक द हेल्प ऑफ गाइड. तो हमें क्या करना होता है, किसी न किसी गाइडर की नीड होती है जो हमको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन बताता रहता है, रास्ता बताता रहता है कि आपको इधर चलना होगा. हु नो द रूट, जो क्या करता है उस रूट्स को अच्छे से जानता होता है. वैसे ही वी विल टेक अस टू अवर डेस्टिनेशन, और हमको हमारे डेस्टिनेशन तक वो ले जाता है. सिमिलरली हमारा फ्लैश में क्या होता है, जो मोशन गाइड होता है, डिफाइन द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जो भी हमारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उनके क्या करता है, उनको पाथ बताता है. इफ़ वी अप्लाई मोशन गाइड अ न्यू लेयर इज इंट्रोड्यूस्ड विद कॉल्ड अ मोशन गाइड लेयर. ठीक है. वट एवर वी ड्रॉ इन द मोशन गाइड लेयर इज नॉट विजिबल इन द फाइनल एनिमेशन. Let us see how motion guide twin is used. Select the stroke color and fill color red and draw a car using the oval tool. Then this is a oval tool and a rectangular tool. Select the object using the selection tool and place it on the first keyframe. Modify and convert to symbol, effect and symbols name जो भी आपको रखना है कर दीजिए. Then here rectangular tool, oval tool, rectangular tool. So drawing a car, convert it into a graphic symbol by selecting modify converted to symbols options. Select the registration point at the center in the convert to symbol dialog box. Move the pointer to frame 45 in the timeline. Right click on the gray field below 45. Select the insert keyframe option from the search options. The keyframe appears as circle in frame. Go to frame, right click on it and select create motion twin option. A light grayish blue bar which with a solid arrow fills appear between the two frames. Okay. Right click on the layer 1. You will get a pop-up menu. Select the add motion guide options. Now flash insert a motion guide layer on the top of layer 1 as shown in figure 9.18. Here add motion guide shown in the figure. Click the pencil to tool, use to tool pencil and pencil mode to smooth. Now draw a path which should be followed by the object while in motion. This one is the path and this is the object, follow the path. Click on the frame 1 in the timeline, choose the selection tool and select the shape to object tool in the option selection of the tool pencil. Shape to object, this one is the starting point. Drag the object and place it just at the starting point of the path. The center of the image is indicated by a small plus symbol when selected. A black circle appears when the image is attached to the motion guide. Release the mouse button when the image is snapped to the guide. To go to frame 45, place the object and attach the center at the ending point of the graph. Insert keyframe by right clicking at the frame 45 guide layer 1. Select control test movie from the menu bar
to test the flash movie. Thank you, students.